बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है वोकैब्युलरी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पार्ट 3। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़े थे, मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद हम आज पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, उसके आगे चलते हैं। वर्ड है इनएडवर्टेंटली। इनएडवर्टेंटली Inadvertently. Inadvertently. इसका मतलब है विदाउट इंटेंशन, यानी बगैर किसी नीयत के, बगैर किसी जानबूझ करके, यानी जानबूझकर ना करना। और इसका जो सिनोनिम है वो है केयरलेसली। He had already inadvertently caused her enough problems. She was mentally tough but fatigued by the events that occurred since they inadvertently met on a night similar to this one, having inadvertently caused the death of King Henry II. उसके बाद है inebriate. Inebriate Inebriated. Inebriated. इसका मतलब है drunken, जो पिया हुआ हो, जिसको नशा हो, जो शराब पिया हुआ हो या कोई ऐसा नशा किया हुआ हो, उसे कहते हैं drunken। और इसका जो एंटोनिम है वो है abstemious. Abstemious. In her inebriated state, she was ready to agree to anything. Scott was obviously inebriated by the time dessert was served. Following the Sunday events, Joe saw a thoroughly inebriated Longworth off on the overnight train. उसके बाद है वर्ड Innocuous. Innocuous. और इसका जो मीनिंग है, इसकी जो मीनिंग है वो है नॉट हार्मफुल, जो नुकसानदायक ना हो। और इसका सिनोनिम है हार्मलेस। His comment seemed perfectly innocuous. Even innocuous substances can sometimes register a positive result in a drug test. जी, उसके बाद है वर्ड instinctive. 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 Done without thinking because of a natural tendency or ability. ठीक है ना, कोई ऐसी एबिलिटी जो आप में पैदाइशी हो। जैसे इंस्टिंक्टिव बहुत सारी हमारी अंदर जो है एबिलिटीज होती हैं। मिडल मैसेज रिएक्शन वाज both instinctive and deeply satisfying. With appalling instinctive, inevitably the cycle would recommence. No creature ever deviates from its instinctive mental programming. I am not an instinctive filmmaker. He is considered a simmered instinctive politician. उसके बाद है insolent. Insolent, Insolent. Insolent. lack of respect, यानी जो इज्जत की कमी हो, जिस चीज़ में, जिस लोग में, जिस आदमी में इज्जत की कमी हो। और इसका मतलब है, इसका सिनोनिम है disrespectful. The bank and sometime insolent refusal to allow a quicker group through is another malpractice becoming more prevalent. Insolent words uttered in the arrogant consciousness of power were always heard in a heaven and always punished. Insolent or audacious in address, coolly impudent or presuming. उसके बाद है वर्ड jolt. Jolt means push or shake, किसी चीज़ को आगे पीछे करना। और इसका जो सिनोनिम है वो है jerk. Jolt. Jolt. The sudden jolt plunged her forward. Her fingers tightened convulsively with every jolt she received. My mother's death gave me a severe jolt. The jolt seemed to jar every bone in the body. उसके बाद वर्ड है जी कर्नल. Kernel. Kernel. Kernel, the central, the most important part of something. और यानी किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट या ख़ास हिस्सा हो। और इसका जो सिनोनिम है वो है essence. Essence या essence. He that would eat the kernel must crack the nut.
This evidence is the kernel of the defendant's case. The nutshell includes the kernel. The kernel of that message was that peace must not be a source of advantage or disadvantage for anyone. उसके बाद वर्ड है जी labyrinth. Labyrinth Labyrinth. Labyrinth. यानी कोई ऐसा नेटवर्क या कोई ऐसा जाल हो, मतलब रास्तों का, जहाँ से किसी को अपना रास्ता ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही हो। यानी रास्ते बहुत हो, एक से ज़्यादा हों और वो बिल्कुल एक जैसे हों, ऐसी कन्फ्यूजन पैदा हो कि वहाँ से रास्ता किसी को अपना ढूंढना मुश्किल हो रही हो। और इसका जो सिनोनिम है वो है meandering. Meandering. We lost our way in the labyrinth of the streets. The old building was a labyrinth of dark corridors. Finally, through a labyrinth of corridors, she found his office. I zigzagged down a labyrinth of the alleys. अच्छा जी, उसके बाद है liberty, state of free और freedom, ये तो आपको पता ही है, आज़ादी। और इसका जो सिनोनिम है वो है emancipate. Do not throw fear of poverty, surrender liberty. Who loses liberty loses all. Liberty often degenerates into lawlessness. फिर है lunacy. 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 Extreme folly or eccentricity, यानी stupidity, यानी बेवकूफ़ियत. It would be a lunacy. It would be a lunacy to try to climb the mountain in this weather. It was sheer lunacy spending all that money. It's a sheer lunacy driving in this weather. It's a sheer lunacy driving in such a weather. उसके बाद वर्ड है जी melancholia. 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 A feeling of deep sadness, यानी डिप्रेशन में चले जाना. सिनोनिम इसका होगा डिप्रेशन में, यानी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाना, उस फीलिंग में चले जाना. He sank into a deep melancholia. This can be seen in melancholia, where the person feels worthless as the superego mercilessly criticizes the ego. उसके बाद वर्ड है जी nom nom, used to express pleasure of eating, यानी जो खाने का वक्त आप मज़े लेते हैं ना, खाने के वक्त जो आपको खुशी मिलती है या जो टेस्ट की वजह से, जायके की वजह से तब आप आवाज़ निकालते हैं नॉम नॉम का, तो उससे उसका सिनोनिम जो है वो होता है ईटिंग. फिर है ऑब्लिगेटरी, यानी कंपल्सरी. मैंडेटरी सिनोनिम इसका होगा. When an end is lawful and obligatory, the indispensable means to is are also lawful and obligatory. The college authorities have now made these classes obligatory. Attendance at school is obligatory. फिर है obtuse. 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 Slow to understand, यानी कोई आदमी जो है वो कम समझने वाला हो, आहिस्ता हो, स्लो हो, तेज़ दिमाग ना हो उसका. और इसका जो सिनोनिम है वो है dumb. Dumb. I have really been very obtuse and stupid. But why? Said Charles, being deliberately obtuse. She cannot possibly be so obtuse. He is being deliberately obtuse. उसके बाद है ordeal. Ordeal यानी experience tough situations, यानी किसी tough situation में, किसी बहुत ही बुरी हालत में जब आप उसका experience ले रहे होते हो, तजर्बा ले रहे होते हो, ठीक है. और इसका जो सिनोनिम है वो है comfort. He spoke frankly about the ordeal. She was subjected to a terrible 6-day ordeal. The ordeal left her looking pale and drawn. The family faced their ordeal with dignity and courage. उसके बाद है palpitations, a noticeably rapid, strong or irregular heartbeat due to agitation, exertion or illness, यानी दिल का बहुत तेज़ी से धड़कना, इरेगुलर धड़कना किसी वजह से, ठीक है, बीमारी की वजह से या किसी वजह से.
और इसका जो सिनोनिम है वो है थ्रोबिंग। He ended up in hospital with heart palpitations. Caffeine can cause palpitations and headaches. Just the thought of flying gives me palpitations. My mother will have palpitations when she sees my new boyfriend. उसके बाद है Pandemonium. Pandemonium. का मतलब है वाइल्ड और नॉइजी डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन, यानी बहुत ही ज़्यादा आवाज़ हो किसी चीज़ की या बहुत ही ज़्यादा शोर वाली आवाज़ हो जिससे कन्फ्यूजन पैदा हो, डिसऑर्डर पैदा हो, तो उसे कहते हैं पैंडेमोनियम। और इसका जो सिनोनिम है वो है टर्मोइल। उसके बाद है पार्सिमोनी। एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी और यूज़ रिसोर्स, यानी जो पैसा खर्च करने के लिए तैयार ना हो, जो पैसे खर्च करने के जो रिसोर्सेज हों उनको यूज़ करने के लिए तैयार ना हो, ठीक है। और इसके कहते हैं, जिसे आप कंजूस कहते हैं ना, मिजरलीनेस, इसका सिनोनिम होगा मिजरलीनेस। ड्यू टू ऑफिशियल पार्सिमोनी only the one machine was built. The gap between the government parsimony and the needs of sport is filled by the commercial sponsorship. Using distance, parsimony, and maximum likelihood methods, the overall picture of the eukaryote small subunit RNA's phylogeny remains unchanged.